the next use of the beneficial microorganisms are the cleaning the environment. So let us now understand how these microorganisms help us clean the environment in a better way. So what happens is wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens are put it in a pit. So we are talking about the waste of plants. Let's suppose हम सब्जी लेके आए घर पे, हमने सब्जी काटी, तो we have some remains, right? जैसे for example we have cover of onion and we have when we peel the cucumber, so whatever the left is whatever the lefts are remained, so what we do is we put it in a pit. So let's suppose this is a ground, ये ground है and यहाँ पे हमने एक pit बना लिया ground के अंदर. Now what are we going to do is we are going to put here various plants. Let's suppose we are putting here plants and vegetable wastes, and what else we can put? We can put here the fruits. All right, got it? So we are all putting everything in this pit which we have made in the ground. All right, so after some time it decomposes to form manure. So क्या होता है कि if you will leave it for a longer period of time, थोड़े दिन छोड़ दो, आपने सब कुछ इसमें डाल दिया, plants डाल दिए, fruits डाल दिए, vegetables डाल दिए. Now you close the pit and leave it for some time. So what will happen? All these substances will start decomposing inside the pit. They will start decomposing in the pit. All right, and that will form, and it will form what? Manure. ये manure बनाएगा, and manure क्या होते हैं बेटा? Manure are very useful whenever you try to grow any plant. तो हम क्या करते हैं जब हम कोई भी crop grow करते हैं fields में, so manure हम उसमें डालते हैं which is organically made. आपने देख ही लिया pit में हमने कैसे plants, fruits, vegetables के waste डाल के हमने manure बना लिया. So it eventually help in providing the nutrients to the growing plant, and that is how we clean our environment also, so that कि जो plants, fruits और vegetable के waste हैं वो इधर उधर ना फेंके रहें. So now let us perform an activity. एक activity देख लेते हैं which is straight from your NCERT. Let us find out. Procedure is take 2 pots and fill each pot half with the soil. So we have taken 2 pots and उसको हमने half किससे भर लिया है? Soil से भर लिया है. And then those 2 pots we have marked as A and B. एक pot को हमने A mark कर लिया है, दूसरे pot को we have marked B. Now put plant waste in pot A. Plant का जो waste है हमने क्या किया है? वो pot A में डाल दिया. And things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. So what we have done is, let's suppose ये मैंने pot बनाया है. This is the first pot that we have taken, and this is the second pot that we have taken. All right. Now I have marked this pot as A and this pot as B. And in pot A I have put what? Plant waste. Pot A में मैंने डाल दिया है plant waste. And in pot B I have put plastic wastes. So got it? Pot A में हमने डाला है plant waste, pot B में हमने डाला है plastic waste. Now put the pots aside and observe them after 3-4 weeks. आपने इसको साइड में रख दिया. अब 3 से 4 हफ्ते के बाद आपने देखना है कि what will happen in the pots. Now what do you think what can happen in these pots? Let's suppose आपने pot A देखा तो उसमें आपको पता है plant waste थे. So what can possibly happen to the plant waste in the pot A? So according to my view, this is what I think, that the plant waste will decompose after some time. तो अगर आप उसको 3 to 4 weeks बाद देखते हो तो you will find out that the plant waste has been decomposed. Whereas अगर आप plastic waste को देखोगे तो plastic waste में आपको नजर आएगा that it will not decompose. मतलब वो decompose हुआ ही नहीं होगा. It will remain the same as it is, whether you have put polythene, whether you have put the plastic toys or any glass bottle. Yes, so they won't decompose, right? So what we will find is, we'll find that plant waste in pot A has been decomposed and the things in pot B remain as it is. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो गया है एंड जो चीजें थी पॉट बी में, ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक वेस्ट है, दे विल रिमेन एज इट इज इन द पॉट बी, राइट? So now compost of the life cycle, let us find out. जो हमने चीज पढ़ी है, let us find out, let us see in this image also. So here are the fruits. ये कुछ fruits हैं. Let's suppose fruits and vegetables. I would rather write down fruits and vegetables. Yes. And when you peel them or when you are consuming it,
all the fruits and vegetables, so obviously कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं पीछे. So what are we going to do is we are going to put it in a pit. ये हमने एक pit में add कर दिए हैं ये सारी material. Now then we have left it for some time. See, next part में हमने इसको क्या कर दिया है? Left undisturbed for some time. कुछ टाइम के लिए हमने इसको undisturbed रखा है. Got it? उसके बाद जब आप कई टाइम बाद देखोगे तो you will find out that it has become the manure. It has now become the manure. क्या बन गया है ये? It has now become the manure. As you can see in the last जो हमने cycle draw की है, उसमें you can see that it has become a manure. All right? And this is how we use manure in case of plants. If you want to grow plants, then we are going to use this manure that we have prepared organically. All right? So I hope you have understood this activity till now. Yes. So the conclusion now is the plant waste in pot A has been converted into manure by the action of microbes because it is an organic matter. Now understand this कि हमने क्या किया है, जो pot A में हमने चीजें डाली थी with the help of microbes, क्योंकि because microbes are present. अगर आप soil में बात करो तो soil में भी microbes present हैं. And the moment you put your waste material in the pot A, so you'll find out pot A में हमने क्या रखा था? Plant waste. And the action of microbes की वजह से they will break down and they will decompose and finally they will form the what? Organic manure. Now, these nutrients released in the process can be used by the plants again. तो क्या कर रहे हैं हम? manure किस में डाल रहे हैं? We are putting manure in the plants that are growing. Plants that are growing. So we are putting manures in them. Now, pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, and broken toy parts did not undergo any change. So now they are asking कि क्या कोई भी change आया है उनमें? No. As we have seen कि उसमें कोई भी change नहीं आएगा. Main reason. अब हम main reason की बात करते हैं कि क्यों? क्योंकि बेटा plants are organic matter. Plants are organic matter and that is the reason they get decomposed when they come in contact with the microbes. Organic matter का मतलब क्या होता है? Even we are organic matter. Let me tell you that. Why? क्योंकि हमारी बॉडी में, if you talk about plants, if you talk about animals, if you talk about humans, so all of us have carbon as a main component in our body. कार्बन की बॉडी हमारी बनी हुई है, उसमें कार्बन as an element is present majorly. And organic matters are the only matter that are able to decompose. ये बात आपने याद रखनी है कि जो जो आपको organic matter दिखेगा, fruits हैं, vegetables हैं, plants हैं, animals हैं, even us, even we get decomposed when a person dies. So it is only because कि हमारी body जो है वो organic matters की बनी हुई है. We have carbon, carbon, carbon bonds, and decomposition means breakage of that carbon bonds that is present in our body. And same goes with the plants. But it doesn't happen in the case of polythene. क्योंकि polythene में बेटा different components हैं, inorganic elements हैं, I would rather say, जिसमें carbon नहीं होता. Carbon is not involved in this conclusion. And carbon ना होने की वजह से polythene में, if you talk about bags, if you talk about empty glasses, bottles, broken toy parts, so they do not have carbon and that is why they do not decompose. Very simple. So are we clear till here? Okay. So now let us find out the microbes could not act on them and convert them into manure. The waste substance in a pot B are non-biodegradable substances that cannot be converted into similar substances. So क्या होता है non-biodegradable? Biodegradable means the things which cannot degrade. Non-biodegradable cannot degrade, and I have already told you the reason that the substances in pot B are not organic. Not organic. The main part is they are not organic. Alright? And since they are not organic, so they won't decompose either. Now let us see, microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. Very easy. चीजें जो degradable हैं and which are smelly, because you know कि half decomposed things actually smell a lot.
कि आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, लेट्स सपोज हमने फेंक दिया है प्लांट वेस्ट मटेरियल, एंड इफ एनी एनिमल डाइड, सो कोई एनिमल मर गया अगर, सो यू नो द एनवायरनमेंट बिकम्स अ बिट स्मेली, या सो here comes the action of microorganisms कि microorganisms further action करके they decompose the remaining parts of the animals and thereby reducing the whole smelly things. Yes, so that is how we clean our environment with the help of microorganisms. Now let us talk about the harmful microorganisms. अभी तो हमने beneficial microorganisms को देख लिया कि उनके क्या क्या benefits हैं. अब हम बात करेंगे harmful microorganisms की कि microorganisms हमें प्रॉब्लम कैसे पहुंचाते हैं और हाउ डू दे कॉज डिजीज इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स और प्लांट्स. यस, सो लेट अस फाइंड आउट नाउ. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमें जो डिजीज होती हैं वो क्यों होती है. इट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स इतने छोटे माइन्यूट हैं, कब हमारी बॉडी में आते हैं वी डोंट इवन नो दैट. And these microorganisms further cause disease in us. So such disease-causing microorganisms are called pathogens. Yes, तो जो disease-causing microorganisms हैं, which are harmful for our body and which can cause various kinds of diseases in case of human beings, plants, and animals, they are called as pathogens. उनको क्या बोलते हैं? There is a term for them. वो term जो हम use करते हैं उनके लिए, that is pathogens. All right? एंड कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज ऐसे हैं कि जो खाना भी खराब कर देते हैं. आपको पता है कि अगर आप फूड है वो आप फ्रिज के बाहर कई देर तक रख दो, लेट्स कई देर भी छोड़ो, इफ यू लीव द फूड फॉर 1 or 2 days आउटसाइड द फ्रिज एंड यू डू नॉट कंज्यूम दैट फूड, सो व्हाट विल हैपन? इट विल गेट स्पॉइल्ड. उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, इट विल बिकम स्मेली. यस, so that is how harmful microorganisms act on it कि खाना ही खराब कर दिया, that you cannot eat them further. अगर आपने खा लिया तो you will get various kind of diseases. And it can also spoil leather as well. जो कई microorganisms क्या होते हैं, wet area हो गया जो थोड़ा सा गीला रह गया हो, and not for only once or twice, for a longer period of time. कि बहुत देर तक आपने कोई चीज रखी हुई है, लेट्स सपोज आपने लेदर रखा हुआ है इन अ मॉइस्ट एरिया जहाँ पे थोड़ा पानी हो, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, दे विल ग्रो ऑन दैट लेदर एंड दे विल फर्दर डिस्ट्रॉय इट्स फंक्शनैलिटी. तो यू वोंट बी एबल टू यूज दैट लेदर अगेन. सो दैट इज हाउ सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म अस. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम. नाउ अब देखते हैं बेटा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. आपको पता है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में these microorganisms cause various kinds of diseases. And so here we are. We now have to study. I'll just introduce you to some of the diseases that are caused by the microorganisms. So let us now study. Pathogens enter our body. Pathogens क्या है बेटा? Pathogens were, as I have explained you, these are the disease-causing microorganisms. These are the disease-causing microorganisms. So these pathogens can enter in our body through various ways that you won't even notice. हमें भी नहीं पता लगेगा कि कैसे एंटर हो रहे हैं. ठीक है? So for example, air we breathe, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उससे भी हो सकते हैं. And water we drink, कई बार पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता नहीं लगता. The food we eat, let's suppose आपने थोड़ा सा स्पॉइल्ड फूड खा लिया and you are not aware of it. And transmitted by direct contact with an infected person. या तो अगर आप उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए जिसको वो डिजीज है ऑलरेडी, बट इट शुड बी एयरबॉर्न. एयरबॉर्न ही होनी चाहिए. जस्ट लेट्स सपोज कोई वायरल डिजीज हो गई, कोल्ड हो गया, ऑलराइट. सो ऑल दीज डिजीज आर व्हाट? दीज आर एयरबॉर्न, कि हवा के थ्रू आपको ट्रांसफर हो सकती हैं. तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है एंड इफ यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्टेड पर्सन, सो यू ऑल्सो माइट कैन गेट दैट पर्टिकुलर डिजीज. And apart from that, the air we breathe, water we drink, food we eat, and lastly carried by an animal. Or the disease can be caused by an animal जो आपके घर में हो या आसपास हो, and if that animal has a particular kind of disease, तो वो disease transmit हो सकती है किसी भी इंसान को. So these are the various ways through which disease can be caused. So now अब देखते हैं और क्या है इसकी properties. So microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact
are called as communicable diseases. अब अभी हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की बात करेंगे. लेट्स लीव साइंस फॉर अ वाइल. या कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल भी छोड़ो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, टू गेट इन्वॉल्व विद ईच अदर, राइट, टू शेयर certain things about each other. So that is what is communication. So communicable disease ऐसी होती है बेटा जो अगर आप किसी को कांटेक्ट में आते हो थ्रू एयर, वाटर, कि आपने सेम वाटर पी लिया, और यू शेयर द फूड इन द सेम प्लेट, or you're having any physical contact with that person, the infected person I'm talking about, so you also might can get that particular disease. वो disease एक infected person से healthy person को transfer हो सकती है, as this image suggests. आप ये image देखो बेटा, image में you can see that this is an infected person. ये infected person है, and this person has some certain kind of a disease, all right, let's suppose, and when that person speaks, so obviously the germs in that person's body comes out of his mouth, yes, or let's suppose if that person sneezes, so jo droplets are coming out from his nose, so that can also, you can inhale those droplets, and that particular disease can get through your nostrils and cause that same disease to you. तो इसी वजह से बोला जाता है कि if a person is infected and suffering from an airborne disease, एयरबॉर्न डिजीज से सफर कर रहा है जो आसानी से हवा से आपको हो सकती है, तो उस पर्सन से हमेशा हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सो दैट वो पर्टिकुलर डिजीज आपको हो ना. ऑलराइट, सो एग्जांपल भी है कुछ हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेस के. तो एग्जांपल है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कॉलेरा, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया. ऑल दीज डिजीजेस आर कम्युनिकेबल डिजीजेस व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड through air, water, food and physical contact from an infected person. Yes? Okay. Now let us talk about the modes of transmission. कि modes of transmission का मतलब क्या होता है कि कोई disease कैसे होती है. तो हमारे पास कुछ examples हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि how certain kinds of diseases get transmitted from one person to another person. All right? So let us start now. Now, when an infected person sneezes, जब छींकता है, infected person when sneezes, and a virus enters the healthy person while breathing. Let's suppose, अभी ये image देख लो आप. Look at the right side, and you'll find that this person is infected. This person is infected, and she is sneezing. ये sneezing है, and she is a healthy person. She is a healthy person. And she inhales these microorganisms she inhales. सामने ही sneeze किया, and she is present in that environment. So what she will do? It is not in her control because she is breathing automatically. तो breathe करते करते जो virus release हुए हैं through the sneezing, these virus can go in her nose through her respiratory tract and can cause diseases. So that is one thing. Secondly, some insects. As I have told you, कुछ animals हैं, कुछ insects हैं that can cause disease. Yes? So, some insects and animals carry disease-causing microbes to act as carriers. कुछ insects ऐसे होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, अभी पढ़ेंगे हम. Just you will know कि हम किन की बात कर रहे हैं. तो कुछ insects हैं, and there are certain kinds of animals which carry diseases, and they cause microbes to act as carrier. तो वो क्या करते हैं, वो particular type of insect and particular type of animals, they carry that disease causing microorganism. उनके अंदर वो microorganisms होते हैं जो disease cause कर सकते हैं. And if that insect bites you, or if you come in contact with that animal, so the disease can be transmitted to you. Now let's suppose houseflies sit on a garbage or excreta containing pathogens. अब आपको पता है कि हाउस फ्लाइज जो है, मक्खियां हैं, दे सिट ऑन एनीथिंग. अगर कोई ओपन फूड होगा तो वहां बैठ जाएंगी. इफ देयर इज अ एक्सक्रीटा ऑफ अ ह्यूमन और एन एनिमल, सो वहां बैठ जाएंगी. गार्बेज जहां पे कचरा होता है, दे सिट देयर ऑल्सो. एंड वहां पे बैठने के बाद, इफ दोज हाउस फ्लाइज सिट ऑन द फूड, ओपन फूड, अगर वो अनकवर्ड फूड पे आके बैठ गई, सो इट कॉजेस सिकनेस इन द पर्सन हु ईट्स दैट फूड. दैट इज अनदर वे ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन.
कि हाउस फ्लाइज के थ्रू भी डिजीज हो सकती है, कि हाउस फ्लाइज गार्बेज पे बैठती है. इट ऑल्सो सिट्स ऑन द एक्सक्रीटा एंड देन इट कैरीज पैथोजेंस. और ऑब्वियसली बेटा ये जो लेग्स आपको दिख रहे हैं, they have pathogens on them, and when these house flies sit on the uncovered food, so obviously the person eating that food becomes sick. Now अब जो मैं इंसेक्ट की बात कर रही हूँ आपसे, तो इंसेक्ट का नाम है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो which carries the parasite of malaria, that is plasmodium. तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर आप सोचो कि किसी को मलेरिया हो जाता है and it is because of the mosquito, no. Mosquito is only a carrier. This female Anopheles mosquito, she is only a carrier. Carrier means she has plasmodium. She has plasmodium in her or in its saliva. Saliva के through these plasmodium gets transferred in the body. And these plasmodium, they multiply in our cells, हमारे blood वाले cells में they multiply, liver में जाके multiply करते हैं, liver के through they go into the blood, and then they cause malaria, which has the symptoms of high fever, shivering, and all these things, headache वगैरह. तो इस वजह से मलेरिया होता है. So we can say that it is not caused by the mosquito, but the mosquito carrying the microbe, that is plasmodium. All right, and apart from that, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये आपको राइट साइड इमेज दिख रही है. सेकेंड इमेज जो आपको दिख रही है ये, दिस इज द फीमेल एडिस मॉस्किटो. इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ये क्या कौन सी डिजीज फैलाती है बेटा? डेंगू. मलेरिया आपको पता लग गया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एंड डेंगू इज कॉज्ड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो. आर वी क्लियर? दो चीजें आपको पता लग गई. अब आपको पता लग गया डेंगू और मलेरिया कैसे कॉज होता है, किसकी वजह से कॉज होता है. एंड ये नाम याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नाम आपको बार बार रिपीट होंगे. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम. फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो causes malaria and female Aedes mosquito is a carrier for dengue virus. Now let's study about the prevention of dengue and malaria. I hope बेटा हम बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं कि बाहर जब बारिश हो ज्यादा तब बाहर नहीं निकलना चाहिए. Always wear full clothes and do not let anywhere जहाँ पे water collect हो, ऐसी कोई भी आपने space नहीं देनी है. And always change the water in the water bottles or coolers or the pots that you have at your home. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे mosquitoes can grow and it is mainly the areas where the water gets collected. तो जहाँ पे water collect होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है वो mosquitoes आते हैं. सो हमें अवॉइड करना है कि हम ऐसी कोई जगह छोड़े ही ना जहाँ पे वाटर कलेक्ट हो और जहाँ पे मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज आ सकते हैं. let us read it. Do not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. कहीं भी हमने वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है. Let it be coolers, tires, flower pots, whatever. All right. And also you must keep your surroundings neat and clean, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर भी mosquitoes grow कर सकते हैं. So that is why you need to keep your surroundings clean and dry. Dry तो सबसे पहले, because जहां water collect हुआ वहां पे mosquitoes will grow and वहीं पे ही डेंगू एंड मलेरिया के वायरसेस भी डेंगू एंड मलेरिया के mosquitoes भी आपको वहां पे मिलेंगे. And if you'll cross that area, they might bite you. And you then might be suffering from dengue and malaria. So you must use all these or practice all these preventive measures at your place. Okay. So now we have various human diseases, their causative organisms, how they get transmitted, and what are their preventive measures. This table is from your NCERT and it is very, very important table for you to learn, क्योंकि इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन सी डिजीज किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया से कॉज होती है, वायरस से कॉज होती है, कैसे कॉज होती है, एंड उसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. इसके ऊपर आपको फुल क्वेश्चन आ सकता है. तो ये टेबल आपको लर्न करना है, डेफिनेटली लर्न करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टडी. जो ट्यूबरक्यूलोसिस है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की वजह से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर से होता है. ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय एयर, कॉज्ड थ्रू एयर्स. नेक्स्ट इज मीजल्स. Measles is a disease which is caused by a virus,
and again its mode of transmission is air. Next is the chickenpox. Chickenpox is also caused by a virus, and it can be, the mode of transmission is either through air or through the contact from the infected person. And next is polio. Polio is again caused by a virus, and the mode of transmission can be caused through air or water. And now अब हम preventive measures देख लेते हैं कि first of all understand that कि जो हमने 4 diseases पढ़ी हैं ये सब airborne diseases हैं maximum. जो इनका primary cause है, primary causative mode I would rather say, that is air, that is through air. तो उसके लिए हमें क्या क्या preventive measures रखने हैं बेटा? Keep the patient in complete isolation. Why it is required? Isolation इसलिए required है बेटा क्योंकि एयर के थ्रू वायरस और बैक्टीरिया बहुत आसानी से आ सकते हैं, एंड इफ यू आर नॉट कीपिंग दैट पेशेंट आइसोलेटेड, सो एयर के थ्रू वायरसेस और बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं. नाउ कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, क्योंकि अगर जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, इफ दैट पेशेंट इज यूजिंग द सेम मटीरियल, लेट्स सपोज कि इफ दैट पर्सन स्नीजेस और कफ्स, तो हाथ पे वो जर्म्स आ सकते हैं, एंड इफ दैट पर्सन इज टचिंग दिस हैंड टू एनी अदर मटेरियल एंड यू आर यूजिंग द सेम मटेरियल, सो यू ऑल्सो माइट गेट डिजीज. नाउ वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली इट प्रिवेंट्स मेजर सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस, कि वो इतनी फिर सिवियरली डिजीज नहीं होती इफ यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड. Now next let us study about the cholera. Cholera is a disease caused by bacteria and it can be caused by water or food. पानी या food के through हो सकती है, contaminated पानी हो जिसमें which is not clean water, and contaminated food हो, food भी अच्छा ना हो तो हो सकती है. उसके अलावा we have typhoid, it is caused by bacteria and the mode of transmission is water. Typhoid भी water से होता है, contaminated water से. All right. So, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है बेटा? सबसे पहले तो आ जाता है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. हमेशा अच्छी आदतें सीखो, पर्सनल हाइजीन बना के रखो, गंदगी नहीं करनी है, ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, ऑलराइट, एंड कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड. अच्छी तरह कुक्ड फूड हमेशा खाना है, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड लास्टली वैक्सीनेशन. इट मीन्स कि सच टाइप ऑफ डिजीज विच कैन बी कॉज्ड बाय फूड और वाटर, तो उस केस में आपको अपना पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आप हर चीज साफ खाओ. इफ यू आर ईटिंग क्लीन फूड एंड क्लीन वाटर, सो दीज डिजीज माइट नॉट हैपन टू यू. नाउ नेक्स्ट इज दी हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय वायरस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू वाटर. ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन. Now next is the malaria. It is caused by a protozoa. जो हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना, प्लाज्मोडियम is a protozoa, so I would rather write down here प्लाज्मोडियम. Plasmodium is a protozoa which is caused through a mosquito, that is its carrier. Mode of transmission is through the mosquito, and to prevent this we must use mosquito net or mosquito repellents. Spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. पानी नहीं collect होने देना है, and you must spray various types of insecticides or control the breeding by not letting the water to collect anywhere. That is to be made sure. So that is how we do the preventive measures, and these are the types of human disease that we have studied, and they are very important, and these are caused by the harmful microorganisms. Alright, so we will cover this chapter till now here, and the remaining chapter we are going to cover in the next session, next lecture जो होगा आपका. Till then keep studying and do not forget to remember or learn whatever points I have told you, and I'll see you in the next chapter.